live, and today we are before treatment live, and those patients who came here for the voice therapy, I will be just showing to them. These are the patients who has come from different places for voice treatment for different communication disorder, and actual number of patients are more, but few are not comfortable with the videos or live, so I will not be able to show them. So in this live, what are the topics which we are going to discuss will be one by one. I'll be explaining to you. First will be introduction about me, then our center, then I'll be talking about our YouTube channel, and then you'll be listening the patient's voice who came today on 15th November 2023 having different voice disorder, and then I'll be talking on what are the information required before starting the speech therapy, and then I'll be talking on kind of service we provide. Next will be high pitch voice signs, symptom, cause and treatment, and then I'll be talking on vocal cord paralysis, signs, symptom, cause and treatment, and then I'll be talking on stammering, signs, symptom, cause and treatment. After that, I'll be talking on is there any side effect of voice therapy or self-treatment. Next will be how to contact us. Then I'll be talking on do we have accommodation facilities at our center. Next will be which treatment is preferred first, voice therapy or surgery for pitch correction. And next will be do we have any branch of our center. After that, I'll be talking on cost and duration of treatment for voice and speech disorder. Next will be how do we treat international patient, online or offline. After that, I'll be talking on is saying 1, 2, 3 or saying in new voices the stage of treatment or the end of the treatment. Next will be is voice therapy result is permanent. After that, I'll be talking on effect of food and drink on voice. Next will be announcement of next batch of group therapy. So that I'm doing now only. Our next batch of group therapy is going to start on 14th of December 2023. Then I'll be talking on who are the good candidate for voice therapy. Next will be is all high pitch voice or female voice is puberphonia. And then I'll be talking on online facilities for communication disorder at our center. And then I'll be giving few tips to keep your voice healthy even though you are having voice problem, even you don't have the problem. So that's helpful for you. So please be connected with us. I'm going to give few tips to keep your voice healthy. And then I'll be replying the question from the live chats. So let's go one by one. तो नमस्कार दोस्तों, एक बार हिंदी में भी बोल देता हूँ. मेरा नाम संजय कुमार है. बाय प्रोफेशन में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ, ऑडियोलॉजिस्ट हूँ, और आज डेट है 15th of November 2023 और आज हम ट्रीटमेंट से पहले लग रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे डिफरेंट वॉइस डिसऑर्डर की वजह से, लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं वो वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो उनको इस लाइव में नहीं दिखा पाऊँगा और उनकी वॉइस को आप लोग नहीं सुन पाएंगे, देख पाएंगे, लेकिन जो भी पेशेंट आए हैं और जो वीडियो के लिए कंफर्टेबल हैं उनको मैं दिखाऊंगा, उनकी आवाज़ आप लोग सुनेंगे ट्रीटमेंट से पहले, और भविष्य में ट्रीटमेंट के बाद भी हम लाइव करेंगे. तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम ट्रीटमेंट के बाद लाइव हों तो आप देख पाएँ. तो बढ़ते हैं एक एक करके. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट मी. Then my name is Sanjay Kumar. By profession I'm a speech language pathologist and audiologist, and I have studied from AIIMS Delhi. I did my Bachelor of Science Honours in Speech and Hearing from All India Institute of Medical Science, New Delhi, and I did my post graduation from University of Mysore, and my post graduation degree name is Master of Science in Speech Language Pathology. And because I'm an audiologist and a speech pathologist both, so we do hearing evaluation, we do hearing at dispensing as well as, and we provide speech therapy and voice therapy. So my passion is treating voice disorder. So we treat voice disorder and we are expert in non-surgical management of voice disorder. So I'll be just showing my degree also because there are so many healthcare quacks. They'll be telling they are a speech pathologist, audiologist. So just you should check their credential. They have a seat or not. So I'll be showing. अगर आप एम्स दिल्ली से पढ़े हुए किसी व्यक्ति का अगर आप डिग्री देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है. मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या लिखा है मेरे डिग्री में. ठीक है, लिखा हुआ ये है, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ. प्रमाणित किया जाता है कि संजय कुमार को जुलाई 2004 की परीक्षा में उपाधि के योग्य होने पर 25 सितंबर 2005 के दीक्षांत समारोह में बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स स्पीच एंड हियरिंग की उपाधि से विभूषित किया जाता है. इधर आप देख पा रहे होंगे तो ये है मेरी मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे झोला छाप किस्म के लोग अपने आप को वॉइस थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कह के जो इनोसेंट लोग हैं उनको जो है ठग लेते हैं. तो मैं सोचता हूँ आप लोग भी जानिए कि कैसे पहचानिएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं.
Next is our center. Our center name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center, और it's located in Bangalore. अगर गूगल में सर्च करेंगे संजय स्पीच हियरिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर तो गूगल मैप पे क्लिनिक कहाँ पे सिचुएटेड है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी. एंड देन if you will be searching in the Google, you will be able to find the location of our center. The center name is Sanjay Speech Hearing and Rehabilitation Center that we started in the year 2010. From then onward, we are creating awareness of non-surgical management of communication disorder. And next is our YouTube channel. So our YouTube channel name is SLP Sanjay Kumar Voice Therapist. I'll be showing once. You can see here also. Yeah. So this is our YouTube channel. You can see that, and subscriber and or we can say the subscriber family has reached up more than 22,000, and the videos number are 1.9k videos. And if you will be click and go to the oldest video, we started from the year 2010. So from last 13 years we are creating hope across the globe about the non-surgical management of communication disorder. So you can explore in details, and once you explore our playlists, then you'll be able to find what kind of communication disorder we treat and how much changes happen, how much duration it takes. So please explore our YouTube channel. And our client list include across the globe. So दुनिया का कोई भी ऐसा महादेश नहीं छूटा है जहाँ से लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि से हमसे ट्रीटमेंट नहीं लिए हैं. तो this is our YouTube channel, and the next is you will be listening patient voice. So उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा. What are the information required before starting the speech therapy? So when you are going to start the speech therapy or voice therapy, first you should check the credential of your therapist, like from which college he has studied first, what degree he hold. For example, my degree name is Bachelor of Science Honors in Speech and Hearing. So that way you just try to find out what degree he is holding, in which year he got the degree, from which medical college or which speech and hearing college he got the degree. And if you want to know about myself, all this information, please refer the description of this live. You'll be able to find it. So in the same way, you can find others also. And the most important thing is all the speech language pathologists and audiologists will be registered in the Rehabilitation Council of India. So they will be having RCI CRR number. So if somebody is having RCI CRR number, so will you think he must be a speech pathologist and audiologist? The answer is no, because the other healthcare professional or other professional who are working in the rehabilitation field, they will be having the RCI CRR number. For example, special educator, psychologist, ear mold technician, speech and hearing technician. So having RCI CRR number is not giving guarantee that he must be a speech pathologist and audiologist. Then how an innocent person can understand? The idea is very simple. If you will follow these steps, I'm just going to turn the camera. You can find out who is the right professional or who can be a healthcare quack. So just do some research in the Google. Rehabilitation Council of India, you can write it. I have taken the screenshot from my mobile. And once you put the Rehabilitation Council of India, then next you can click about us. Then you will reach to this page. Here you will find the 3 lines. So you can click on these 3 lines, and then you will be able to reach on this page, and here will be CRR registered. So click the CRR registered, then you will be able to reach to this page. So in the second it is written search by CRR number. So second one you can click it, and then you will be able to reach on this page, search by CRR number. So you can put the CRR number of that person who is claiming that he is a speech pathologist, audiologist or speech therapist. So if you want to know my CRR number, just please refer the description of this video. You will be able to find it. So the same way you try to find out others, and then you can submit. So once you will submit, then you will be able to get the information like he is registered as a speech pathologist, audiologist or different professional, or he's just given the fake CRR number, and he is having the bachelor degree or master degree. In India, if someone is having at least bachelor degree, he is eligible to work as a speech pathologist, a speech therapist and audiologist. But the countries like USA, they should have at least master degree to work as a speech pathologist and audiologist. So you should not get confused like technician and the speech pathologist and audiologist. Both are different things.
So this is the way you can find out who is the right professional and who is the हेल्थ केयर क्वैक्स. तो झोला छाप और असली प्रोफेशनल को कैसे पहचानेंगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप इसको फॉलो करेंगे तो पता चल जाएगा. तो मेरे CRR नंबर के बारे में जिनको भी उत्सुकता है जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मिल जाएगा. उसी तरह से आप दूसरों का भी खंगालिए, कॉलेज डिग्री CRR नंबर किस रूप में रजिस्टर्ड है. क्या पता आप कोई टेक्नीशियन है वो कह रहा है कि वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट है, या कोई फेक ही CRR नंबर डाल दिया है. तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी एंड मनी. क्योंकि ऐसा मैं क्यों बताते रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल पुबरफोनिया के पेशेंट थे और वो एक ऐसे झोला छाप के पास चले गए ट्रीटमेंट के लिए और उनको समझ में नहीं आया कि वो राइट प्रोफेशनल है या झोला छाप है. फिर उसके बाद फोनेटरी गैप और सल्कस वोकलिस डेवलप हुआ. तो आपकी वॉइस और वोकल कॉर्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसको किसी कह सकते हैं झोला छाप किस्म के व्यक्तियों के हाथ में नहीं देना चाहिए. इससे आपकी कैरियर, आपकी पूरी ज़िंदगी इस पे डिपेंडेंट है. जिन लोगों की वॉइस की समस्या है वो अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे तो आपको समझ में आएगा. तो वॉइस थेरेपी इज़ नॉट ए जोक. ठीक है, और हम एक एक करके अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं. यू विल बी लिसनिंग पेशेंट्स वॉइस बिफोर ट्रीटमेंट. मैं बुलाना चाहूँगा पहले बशीर को. बशीर आप आ जाइए, चेयर ले लीजिए. बशीर आप, हम लोग YouTube लाइव हैं हमारे YouTube चैनल पर ट्रीटमेंट से पहले आज, भविष्य में इनफैक्ट हम लोग ट्रीटमेंट के बाद भी होंगे. तो आप बताइए क्यों यहाँ आए हैं, क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं, बताइए. मैं हाई पिच वॉइस है मेरी, उसे ठीक करने के लिए आए. हाँ, हाई पिच वॉइस थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया. आम बोलचाल की भाषा में बताइए क्या समस्या होती है जब आप लोगों से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो क्या समस्या होती है? बात करने में दिक्कत आती है और मतलब लड़की जैसी वॉइस आती है. कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से आए. इंदौर से. हमारा सेंटर बैंगलोर में है, इतनी दूर से आप आए. और आप अपनी हॉबीज़ बताइए, छुट्टी के दिन कैसे वक्त बिताते हैं? छुट्टी के दिन घूमते फिरते और अच्छा, मॉल वगैरह में जाते. ठीक है. अपने एजुकेशन के बारे में बताइए. प्राइमरी एजुकेशन से लेके अभी तक कहाँ कहाँ पढ़ाई किया आपने? हमारे गांव में एक स्कूल है, वहाँ पे पढ़ाई की है. फिर से ट्रीटमेंट के बाद लाइव होंगे. जिनको भी उत्सुक, बशीर है ना आपका नाम, बशीर की वॉइस में हम कितना चेंज कर पाए ट्रीटमेंट के बाद 8 दिन में, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके बशीर, थैंक यू. आप बैठ जाइए. मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा पवन कुमार को. हाँ, पवन कुमार. पवन कुमार इज ऑल्सो हैविंग ए काइंड ऑफ वॉइस प्रॉब्लम. सो पवन कुमार, फ्रॉम विच प्लेस यू केम एंड व्हाई यू केम हियर? I came from Hyderabad and have some voice disorder which... what is the ENT finding? Sorry? ENT finding in the Spasmodic dysphonia. Some dysphonia, something is there. I could not remember. Oh yeah, I saw that. It is adductor spasmodic dysphonia. Disorder, dysphonia. I have seen your report, ENT Yes, finding. So have you taken any treatment at your place, native place? Yes, I have taken twice in Hyderabad. For how much duration you took? So approximately 2 to 3 months. So 2 to 3 months you took one place twice, and then next place again 2 to 3 months. Yeah, in same Hyderabad but different institutes. Okay, and what work you do? I'm a chartered accountant who is working for a company as an accounts manager. So how it is affecting this voice, your chartered accountant As my company, profession? as my company is a bigger company, so I have to speak with multiple people and multiple professionals. So when I'm speaking, they are unable to take what I'm communicating. So there is some issue when sometimes it will affect my explanations. So it's affecting your career growth, do you think? Yes, sir. You know, it will when I'm unable to communicate to the correct point to the team, they're not able to understand me. They're not able to take the point what I'm taking. So that will definitely affect my career. I mean. Okay, so voice is the problem, but it is affecting your career growth sir. also. So we'll do the needful, and after 8 days again we are going to do the post-treatment live. So those having the curiosity how much his voice was changed, so please subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that once we'll be doing after treatment live after 8 days, you can watch and you can see the changes. So thank you so much for coming from Hyderabad and showing faith on us. And just next I'll be calling, you can say. Monica Kaushik, and she is having a unilateral vocal cord paralysis. So Monica Kaushik, we are live at our YouTube channel.
Yeah, so tell us what exactly problem you are facing, why you came, we are having our YouTube channel. Yes, so I am suffering from a unilateral vocal cord paralysis, because of which the voice is not coming proper, and there's a lot of hoarseness, there's no power to the voice, the pitch is very low. Means And, loudness is very low. Loudness is very low, there's no power in the voice at all. Mm-hmm. And it's affecting my day-to-day life, because it's even when I'm speaking for a little longer time, it makes me very tired. So I when actually you got feel tired. when you got this vocal cord paralysis? It's around 3 months. 3 months back. And where you stay? I'm from Mumbai. So from Mumbai you came for the voice therapy. Yes. Okay, thanks for your faith. We'll do the needful. And those who are having the curiosity, how much voice is going to be changed in 8 days. In fact, your treatment will be longer, but at least after 8 days also we are going to do the live, and once we'll complete the treatment, we'll be doing live. So please subscribe our channel and press the bell icon so that once we do the post-treatment live, you can watch. And yeah. So anything how it's day-to-day life you are getting affected with this voice problem? थोड़ा हिंदी में बोल दीजिए एक दो लाइन. जी, सो मेरा रोल कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कोच का है और ट्रेनर का है. सो आई एम अ ट्रेनर एंड अ फैसिलिटेटर, और 1-to-1 कोचिंग का भी काम है मेरा. तो वॉइस ऑलवेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेरे प्रोफेशन में. तो पिछले 3 महीने से ये काफ़ी अफेक्टेड है. मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह हाथ से निकल गए हैं. Okay, thanks for your faith, and we'll do the needful. Thank you so much, and you can sit there. So we'll go to the next topic, what we decided earlier. So you are listening the patient's voice. So actual number of patients are more than what you have seen that. So if you are not comfortable with the videos, so I was not able to do live, and so we are going to the next topic now. What kind of service we provide? To understand the kind of service we provide, my suggestion is those who are having the curiosity, just explore our YouTube channels, this playlist. So here you will find different communication disorder playlists, and all the playlists will be having pre and post treatment videos. So that will give you an idea how much changes are there before therapy and after therapy, how much change we were able to do. And the next, how much time it took, so you will get an idea, because before treatment we tell the date, after treatment also we'll tell the date. So if you are having the curiosity, you can just explore our YouTube channel playlist, and in that you will be able to find the playlist for example, vocal cord paralysis, stammering, high pitch voice, puberphonia, sulcus vocalis, phonatory gap, misarticulation, pronunciation problem. After a stroke, aphasia happened, that also we'll be able to find. After hearing testing, once we fitted the hearing aid to the clients, how their communication got improved. So all kind of different communication disorder playlists you will be able to find once you will explore our YouTube channel. And in fact, we started our YouTube channel in the year 2010. So once you go to the videos and you'll explore the oldest video, you'll find in 2010 onward we are creating awareness about this communication disorder with the success stories of different patients. So next is high pitch voice signs, symptom, cause and treatment. So high pitch signs is very simple. If a guy whose age is more than pubertal age, and when he's talking on the phone, people are thinking they are talking to a small child, or they are thinking they are talking to a girl. So this may be the symptom of high pitch voice. And cause and treatment. So before discussing on the cause and treatment, let's first understand the normal speech production mechanism. Once you will understand the normal speech production mechanism, it will be easier for us to understand the abnormal. For normal speech production, first thing is the thought that comes in the brain, then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. So once you put air pressure below the vocal cord start moving like a string of a violin, and guitar and sounds generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. For example, if you want to say pa, both the lips are coming closer together and touching each other. When you want to say ta, tongue is coming between the teeth. When you want to say ka, back of the tongue is getting elevated and touching the soft palate. So each and every sound has own place, own manner of articulation.
So when you say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cords move, sound generate, we modify that sound into different sound. In one sentence there are so many words, in each word there are so many sound, each sound has own place, own manner of articulation. So this is little complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. If coordination among these muscles goes, fluency goes. That can be seen in case of stammering. This is one stammering patient also, but he's not comfortable with the live. So, as I told, like here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like a structure known as vocal cords. So, friends, before puberty, either it's a boy or a girl, so both will be having almost similar vocal cord. But during puberty, in case of boys, the vocal cord mass and length will increase due to a hormone called testosterone. So if the vocal cord mass and length will increase, pitch reduces. You can also correlate with the guitar string. In case of guitar string, thin string produces high-pitched voice, thick string produces low-pitched voice. So before puberty, the vocal cord is equivalent to, or it is look like a thin string of a guitar-like structure, and after puberty, the vocal cords become a thick string of a guitar-like structure. So when guitar string will be the thin, pitch will be higher, and guitar string will be the thick, the pitch will be lower. So the boy who was before puberty speaking in a high-pitched voice. Why? Because his vocal cord was a thin string of a guitar-like structure. But during puberty, if the vocal cord mass length got increased, the vocal cord has become thicker, so now ideally the voice should be the low pitch. But that boy who was having puberphonia or high pitch voice, he has used high pitch voice from childhood to puberty, and during puberty vocal cord mass and the length got increased, it is ready to produce the low pitch voice. But because of so many years habit, he will be trying to maintain his older voice, childhood voice. The reason we can say that little bit, it will be psychological. So what he will start doing, because now the vocal cord is thicker, it is ready to produce the low pitch voice, but he want to use the childish voice because of so many years habit. So he will, instead of vibrating the whole mass and the whole length of the vocal cord, he will start vibrating only thin edges of the vocal cords. So once we will start vibrating thin edges of the vocal cord actually a thick string of a guitar-like structure, but behaving like a thin string of a guitar-like structure. So when the guitar string will be the thin, the pitch will be higher. So that's why even after puberty, that kind of people, even the first patient who's live, you have seen that he is still talking in a high pitched voice. I'm talking about the first patient Basir, who's in the live, what the voice you have heard. So what I will do as a speech language pathologist, I'm not going to replace the larynx and the vocal cord. I will stimulate the whole mass and the whole length of the vocal cord with the voice therapy, with the certain vocal exercise, or we can say the voice therapy. And once the whole mass and the whole length of the vocal cord will start vibrating, so instead of thin edges, now the whole mass and the whole length of the vocal cord is vibrating. So vibrating mass of the vocal cord will increase, vibrating length will increase. It means the vocal cord, which was behaving like a thin string of a guitar-like structure, it will start behaving like a thick string of a guitar-like structure, and then the pitch will be lower. So this is the basic biophysics behind that. And if you have some knowledge of acoustics, I'll try to correlate with that one. If you have studied in acoustics, there is one formula for vibration of a string formula, that n is equal to 1 by 2L under root T by M. N is the frequency. Frequency means if a string is vibrating like in 1 second, how many times it's vibrating, we call it the frequency. So the vibrating string frequency depend upon the length of the vibrating string, tension of the vibrating string, and mass per unit length. If you want to understand, you can write this formula. N is equal to 1 by 2L under root T by M. So the frequency is depending upon the length of the vibrating string. So N is equal to 1 by 2L under root T by M. So it means frequency is inversely proportional to the length and the mass of the vibrating string, but directly proportional to the tension. So before puberty, L and M are less, the N will be higher. But after puberty, due to the testosterone hormone impact, mass is increasing, length is increasing. So M and L are increasing, so N will reduce. So for a normal male, the mean pitch should be ideally between 100 Hz to 150 Hz. So for a child, if you will be checked, it may be 200 or 250 Hz it will be go. And those who are high pitch voice patient, they will be having more than 150 Hz pitch once we do the acoustic analysis. So I'll not be replacing anyone's larynx on the vocal cord, but
he is the patient who is having a high pitch voice only vibrating thin edges of the vocal cord, it means L is less and he is not vibrating whole length also, the L is less, M is less. But once I will stimulate, vibrating mass will increase, vibrating length will increase. So L and M are increasing, the N will reduce. In the formula N is equal to 1 by 2L under root T by M. So this is a very simple biophysics behind that. So I was talking about high pitch voice, sign, symptom, cause and treatment. So this is a very interesting thing. Recently I learned that I want to share for everyone. What happened, there was one patient, he came in I think the last group, but he didn't continue the therapy because of his personal reason. So when he came here and so I heard his voice, the voice was quite hoarse and breathy, then I suggested to go for laryngoscopy. But when we communicate with the patient, we also having their email ID, so we try to correlate if we have communicated earlier also, or if any report he has shared earlier also. So once I asked my assistant to just check that previous communications, we saw that he has communicated in the 2020. And in 2020, the kind of mail we send, because depending upon the perceptual evolution, we send the mail to the patient based on the expected outcome. So the kind of mail we have sent to him was, we are very, very confident will be manage his problem, will be able to treat. But now he came once, I was so much scared, immediately I sent for the laryngoscopy. And I was, after this 3 years, just my confidence went, and the condition of the voice was so bad, my confidence went. My actual confidence has not went, but this kind of voice he was having. So once we sent for laryngoscopy, we found that the guy was having the phonatory gap and the sulcus vocalis. So earlier I was thinking that the sulcus vocalis may be congenital. But based on that mail, I thought he was having normal vocal cord. Based on that, we have sent the mail, and now he's having the sulcus vocalis and phonatory gap. So what went wrong? So we just try to go inside the depth, and we asked that patient what you did in these 3 years. So he told he'd taken the voice therapy, but the voice therapist was not a speech language pathologist. He was a surgeon. Maybe he was not busy in the surgery, so he was due to unemployment. He was giving some the technique what we use, but not in the same way what we use. So he just asked him to do some shouting with a certain way, and after shouting, the thin edges of the vocal cord got damaged, and that it developed the sulcus vocalis. Then he started doing some research online in the Google. Does vocal abuse can result into the sulcus vocalis? And I found some article, journal article. Yes, the sulcus vocalis can be congenital, means by birth. Nature has given the thin edges of the vocal cord. But due to the vocal abuse, because of the shouting or doing your voice and vocal cord, using the voice and vocal cord in wrong manner, that may also result into the sulcus vocalis. And when the sulcus vocalis phonatory gap comes, it becomes more challenging for the treatment, what I have seen in my patient. Even you can explore our YouTube channel playlist, you will find in sulcus vocalis phonatory gap patients, the changes are less. So what people are thinking, like healthcare quacks, for example, if you want to buy the paracetamol medicine, if you have a fever, if you are going to just take this paracetamol medicine from the shopkeeper, medical shop, hardly, or maybe some antibiotics you are buying in case of fever, he will not charge any consultation fee. He will just give to you. But even with the same problem, if you are going to a physician who is having qualification like MBBS, MD or DM, he is having, so he will take the fees. So what happened, the healthcare quacks will start doing like that. Like a medical shop, he has taken treatment from somewhere, he has seen somebody is doing something, or due to unemployment, he will tell, I will give the free treatment. Once by mistake one patient get treated, he will put those video on the social media, and they will reflect themselves, they are a speech pathologist and audiologist or a speech therapist. And the innocent people, or we can say that extra smart people, I will tell two things. Innocent people, they will think that he is a extra smart people, they will just compare the fees wise, if you are going to a physician who has the proper MD or DM qualification, he will charge the fee. But even the same medicine you are buying from the medical shop, he will not charge anything. So in that way, they will reach to that person. Two kind of people, I can say that. One is the extra smart, and other is innocent people. And then they will come at the end, after doing all this experiment, developing the sulcus vocalis, after developing the phonatory gap. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी वॉइस और वोकल कॉर्ड बहुत ही कीमती है, झोला छाप के हाथों में मत दीजिए. कभी सल्कस वोकलिस फोनेटरी गैप हो गया ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा. अगर भरोसा नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट को देखिए, यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में सल्कस वोकलिस और फोनेटरी गैप में मैंने बहुत ही कम चेंज कर पाया है. और मैं तब तक यही सोचता था कि सल्कस वोकलिस इज़ ए कंडीशन विच इज़ कॉन्जेनाइटल.
लेकिन जब वो पेशेंट आया 2020 में हमसे कम्युनिकेट किया, तब उसकी वोकल कॉर्ड्स ठीक ठाक थी, वॉइस ठीक ठाक थी, हमने परसेप्चुअल एवोल्यूशन किया, उसके आधार पे हमने मेल भेजा। इस 3 साल के बीच में जाकर झोला छाप, मैं तो झोला छापी कहूँगा, अगर मान लीजिए कोई दांत के डॉक्टर दिल का इलाज करेगा तो हम झोला छापी कहेंगे ना। सर्जन सर्जरी छोड़कर अगर वॉइस थेरेपी देगा, या मैं वॉइस थेरेपी छोड़ करके मैं मेडिसिन देने लगूँ या सर्जरी करने लगूँ, तो मैं भी एक झोला छापी कहलाऊंगा। और ऐसा कौन से लोग करते हैं? जिस चीज़ का पढ़ाई किया है उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो कुछ न कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ दूसरे के फील्ड में घुस के कुछ करते हैं। लेकिन किसी के वॉइस और वोकल कॉर्ड को तो आप शाउटिंग करा के डैमेज करने का अधिकार किसी ने तो नहीं दे दिया है ना। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आया और मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हुआ, क्योंकि मेरे प्रोफेशन में गलत लोग घुस करके, गलत एक्सरसाइज करके लोगों की को फोनेटरी गैप और सल्कस वोकलिस डेवलप करके और तब लास्ट में मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं अवेयरनेस के लिए थोड़ा बताते रहता हूँ। तो ये हो गया हाई पिच वॉइस साइंस, सिम्टम, कॉज एंड ट्रीटमेंट। तो हाई पिच वॉइस जो एक होती है वो एक सिम्टम है। सो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्यूरफोनिया ऑल्सो, और इट मे बी बिकॉज ऑफ द सल्कस वोकलिस और फोनेटरी गैप ऑल्सो, ड्यूरिंग मसल टेंशन, डिस्फोनिया ऑल्सो। तो जैसे कि कहते हैं कि फीवर इज ए काइंड ऑफ सिम्टम। फीवर कैन बी ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और मे बी ड्यू टू सम अदर रीजन ऑल्सो। द सेम वे हियर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजन एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू डू द ट्रीटमेंट लाइक वॉइस थेरेपी. And next is vocal cord paralysis, signs, symptom, cause and treatment. So those who are having the vocal cord paralysis, their voice will be breathy. Because of the vocal cord paralysis, both the vocal cord will not come closer together, so there will be some gap between these two vocal cords, so the voice will be breathy. And because air is getting wasted, so once you put air pressure below the vocal cord vibrate. So amplitude of vibration will decide the loudness, but when the air will be wasted between these two vocal cords, so what will happen? The amplitude of vibration of the vocal cord will reduce, the loudness will be less. The voice will be breathy, loudness will be less, voice will be hoarse, and because a lot of air is getting wasted, the patient will be tired very soon while speaking. I think here we have like Monica Kaushik is having, she is having the vocal cord paralysis. So this is the vocal cord paralysis symptom and cause and treatment. So as I told, like here we have larynx. Inside the larynx we have two string-like structure known as vocal cord. The nerve which supplies to the vocal cords, technically called recurrent laryngeal nerve. This is the branch of the vagus nerve, also called 10th cranial nerve. So if the nerve which is supplying to the vocal cord called recurrent laryngeal nerve get damaged due to some infection like bacterial infection or viral infection, or during some surgery called thyroidectomy, or maybe during cardiac surgery also, sometime this nerve get damaged. So sometime it get damaged both the vocal cords, there will be bilateral vocal cord paralysis, and sometime one vocal cord will be getting damaged, then it's unilateral vocal cord paralysis. So if this is the two vocal cords, when the normal vocal cords move, so they will vibrate like this, and at the same time they will be coming closer together also. So in Monica Kaushik's case, and think in your case left vocal cord is paralyzed, na? So in her case left vocal cord is paralyzed. So when we see saying anything she is speaking or saying ah also, so what is happening? Right vocal cord is coming towards the left vocal cord, but left is not moving. So that air gap is creating, and this air gap, due to this air gap, lot of air is getting escaped. The voice is breathy and the loudness is less. So this is happening. So in the voice therapy, what we'll be doing? We'll try to stimulate the paralyzed vocal cord. That left vocal cord which is paralyzed, we'll try to stimulate with a certain vocal exercise. There may be chances it will start moving, and there can be another situation. We'll be not able to move the paralyzed vocal cord. So in that situation, what we will try to do, we'll bring the right vocal cord more closer towards the left vocal cord. So the air gap will reduce, means phonatory gap will reduce, and the voice quality will improve because of the air gap will be reducing. So the wastage of air will reduce, so the amplitude of vibration of the vocal cord will increase and the voice will improve. So this is the basic biophysics behind the vocal cord paralysis and how we are going to do the treatment by voice therapy. And next is stammering, signs, symptom, cause and treatment. तो stammering का एक पेशेंट है जो कि लाइव के लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं इस पर भी बताता हूँ. इसको हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि वो हिंदी स्पीकर हैं. तो स्टैमरिंग के साइन सिम्टम्स बड़ा ही आसान है. जैसे कि आप देख सकते हैं कोई पेशेंट ऐसे बोलेगा क क क क किरण, या फिर एक तो ये हो गया रिपीटेशन, फिर दूसरा हो गया प्रोलॉन्गेशन. रिएक्शन अगर बोलना है तो री को एकदम लंबा कर दिया, ये हो सकता है. या फिर अगर बोलना है माय नेम इज़ संजय कुमार तो बोलेंगे माय नेम, फिर लंबा सा गैप संजय कुमार. तो एक
रिपीटेशन हो सकता है, प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, बड़ा सा पॉज हो सकता है स्टैमरिंग के केस में। और कुछ लोग कुछ फिलर वर्ड्स का सहारा लेते हैं, जैसे कि बोलेंगे आई मीन, मतलब कि, तो ये सारे कर दें तो ये हो जाएगा स्टैमरिंग के सिम्टम। तो बेसिकली क्या होता है कि जो स्पीच प्रोडक्शन की जो मसल्स हैं उनका ब्रेन के साथ अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है तो हमारी स्पीच की फ्लुएंसी अफेक्टेड होती है, जो कि स्टैमरिंग के केस में देखा जाता है। ये रहा स्टैमरिंग के साइन सिम्टम। और हम कॉज के बारे में बात करते हैं। तो कॉज तो ये हो गया कि आपके स्पीच प्रोडक्शन के मसल्स का ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ये एक यूनिवर्सल रीज़न है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन और थोड़ा अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो मैं अपने पुराने पेशेंट के एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैंने अपने क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि ग्रैंडफादर को स्टैमरिंग थी, फिर सन को स्टैमरिंग थी, ग्रैंडसन को स्टैमरिंग थी, और ग्रैंडसन जो थे वो ट्विंस थे, ट्विंस को स्टैमरिंग थी। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर आर सर्टेन जीन्स पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट कैन बी जेनेटिक इन ऑरिजिन। फिर मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो स्टैमरिंग का जो पेशेंट था वो बिल्कुल नॉर्मल था, पड़ोस के बच्चे को स्टैमरिंग थी, उसको चिढ़ाना शुरू किया, चिढ़ाने के क्रम में उसको स्टैमरिंग डेवलप हो गई। सो इट कैन बी ए लर्न बिहेवियर, स्टैमरिंग कैन बी। इससे क्या मतलब निकल के आता है, इट मीन्स स्टैमरिंग कैन बी ए लर्न बिहेवियर, क्योंकि पड़ोसी से सीख गया, पड़ोसी के बच्चे से सीख गया उसको चिढ़ाने के क्रम में। फिर मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था और वो अपनी ग्रैंड मदर से इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैच था, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई और बच्चे को स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई। तो इट कैन बी इन साइकोलॉजिकल और इमोशनल इन ऑरिजिन। फिर मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि सर में चोट लगी और सर में चोट लगने के बाद स्टैमरिंग स्टार्ट हो गई, तो इट कैन बी न्यूरोजेनिक इन ऑरिजिन। तो आप देखिए वेरिएशन कितना ज़्यादा है, जेनेटिक है, न्यूरोजेनिक है, साइकोजेनिक है, लर्न बिहेवियर है। और भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको सबको जानना चाहिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अगर पेरेंट्स नया बने हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 से 5 साल के बीच में क्या होता है ना, स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है बच्चों के केस में। तो उनके पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वोकैबुलरीज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके पास शब्दकोश जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो वो बात करने के क्रम में क्या होगा, बीच बीच में रुक जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं, लिमिटेड वोकैबुलरी होने के कारण। लेकिन कहने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी। ये एक स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट का फेज़ है जो वक्त के साथ चला जाएगा। कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि बड़े स्पेसिफिक होते हैं और टोक टाक करने वाले होते हैं, बोलेंगे ऐसे मत बोलो, वैसे बोलो, क्यों अटक के बोल रहे हो, ठीक से क्यों नहीं बोलते। तो उनके टोक टाक करने की वजह से भी स्टैमरिंग डेवलप हो जाती है। तो फिर एक बड़ा ही मुश्किल काम है ना कि अगर बच्चे को स्टैमरिंग होने लगी, मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, अगर इसको स्टैमरिंग हो रही है, 3.5 साल का बच्चा है, तो वो नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी है या स्टैमरिंग है, एक आम व्यक्ति जाने कैसे। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। अगर बच्चे को स्टैमरिंग 6 मंथ से ज़्यादा हो रही है तो ये स्टैमरिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर उसका जस्ट अभी 2-4 दिन हुए हैं तो हो सकता है कि नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी का फेज़ हो और वक्त के साथ चला जाएगा। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो रही है तो हर हाल में आपको स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से मिलके डिस्कस करनी चाहिए, प्रॉपर असेसमेंट के बाद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। और ये हम बात कर रहे थे स्टैमरिंग साइन सिम्टम कॉज पे हमने बात की और हम ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्पीच प्रोडक्शन के जो मसल्स हैं उनका ब्रेन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो उसके कोऑर्डिनेशन पे काम करते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्पीच प्रोडक्शन के कौन से मसल्स हैं। तो साउंड जनरेशन के लिए क्या चाहिए, वोकल कॉर्ड को मूव कराने के लिए हवा चाहिए। हवा कहाँ से आएगा, ब्रीदिंग से आएगा। तो पहला स्टेप का मसल्स क्या हो गया, ब्रीदिंग मसल्स, टेक्निकली कह सकते हैं डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स। तो पहले हम काम करते हैं डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स के कोऑर्डिनेशन पे। फिर नेक्स्ट क्या है, वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स को तो कोऑर्डिनेट कराना ही है, साथ साथ लैरिंजियल मसल्स को भी कोऑर्डिनेट करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, लिप्स, टंग, जॉ का मूवमेंट, आर्टिकुलेटर्स का मूवमेंट। तो फिर हम अगला जो स्टेप्स के जो हमारे एक्सरसाइज इस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं कि जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स कह सकते हैं कि डायफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स, लैरिंजियल मसल्स, आर्टिकुलेटरी मसल्स, सबको इंक्लूड करते हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए। मैं कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे कोई पूछ रहा है कि साइकिल कैसे चलाते हैं, तो हैंडल पकड़ो, पैडल को प्रेस करो, ऐसे ही कुछ बता रहा हूँ। लेकिन जब रियल लाइफ में जब मैं पेशेंट को सिखाऊंगा, थेरेपी में दूंगा तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर उसके बाद हम लोग वर्ड्स पे आते हैं, फ्रेजेस पे, सेंटेंसेस पे, फिर कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। कॉन्वर्सेशन मेरे साथ सर्टेन टेक्निक के साथ, फिर 1-to-1 स्ट्रेंजर के साथ, फिर ग्रुप में पब्लिक स्पीकिंग। तो कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो एक जस्ट मैंने आइडिया दिया कि हम लोग काम कैसे करते हैं। तो ये रहा, हमने बात की स्टैमरिंग साइंस, सिम्टम, कॉज एंड ट्रीटमेंट पर। और अब हम आते हैं, इज़ देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ वॉइस थेरेपी और सेल्फ ट्रीटमेंट। So when you are taking treatment from a speech language pathologist who is expert in treating voice disorder, there is no side effect. But when you are taking
treatment from healthcare quacks or self-treatment, or a person who is not a speech pathologist, who is not trained in the voice disorder, there is always side effect, because wrong way of doing exercise or wrong vocal exercise sometime may damage your voice and vocal cords. And I have already seen so many patients who developed with the vocal abuse, vocal nodule, phonatory gap, and sulcus vocalis, and even the vocal cord paralysis. Also I have seen one patient with the vocal abuse they developed. The vocal abuse is nothing but shouting is a kind of vocal abuse, doing wrong vocal exercise is a kind of vocal abuse, smoking is a kind of vocal abuse, frequent throat clearing is a kind of vocal abuse. So these are the vocal abuse. When the background noise is very high and you are speaking to somebody continuously, that is also called vocal abuse. So vocal abuse may result into the vocal cord nodule, vocal cord polyp, muscle tension dysphonia, phonatory gap, even sulcus vocalis. So your voice and vocal cord is very healthy, very pervious. So don't you do the vocal abuse. तो कहने का मतलब हुआ कि अगर प्रोफेशनल से ट्रीटमेंट लेते हैं जो फील्ड में ट्रेंड है, तो देयर इज़ नो साइड इफेक्ट. खुद से इलाज करते हैं, झोला छाप से इलाज करवाते हैं, तो देयर इज़ अ साइड इफेक्ट. नेक्स्ट इज़ हाउ टू कॉन्टैक्ट अस. तो हमसे कॉन्टैक्ट करना आसान है. यू कैन जस्ट refer the description of any of our videos or any of the live. You'll find our contact detail, websites. Next is do we have accommodation facilities at our centers? Our center is a kind of a clinic, so it's not a big hospital, so we don't have accommodation facilities, but our team will be supporting you to get the nearest accommodation. She will be guiding, or he will be guiding which treatment is preferred first, voice therapy or surgery for pitch correction. So for pitch correction, according to my experience, first you should try the voice therapy. If you are going for thyroplasty or surgery, after the surgery you have to again take the voice therapy. Then why you should not try first voice therapy? कहने का मतलब, अगर आप सर्जरी करवाते हैं पिच करेक्शन के लिए, तो सर्जरी के बाद वॉइस थेरेपी लेनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना पहले वॉइस थेरेपी लिया जाए. नेक्स्ट इज डू वी हैव एनी ब्रांच ऑफ आवर सेंटर. तो हमारे सेंटर का अभी तक कोई ब्रांच नहीं है. आवर सेंटर इज ओनली वन. नेम इज संजय स्पीच हियरिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, लोकेटेड इन बैंगलोर. वंस यू द गूगल सर्च, यू विल एबल टू फाइंड द लोकेशन एंड अदर डिटेल्स. Next is cost and duration of treatment for voice and speech disorder. So that may vary. So we suggest those who are having the question related to the cost and duration, please call us. We'll do the perceptual evaluation and then we will be able to comment on the treatment cost, duration, expected outcome, online, offline, etc. And how do we treat international patient, online or offline? So we do perceptual evaluation and then we decide who can be a good candidate for online or offline. So our international clients are in both the categories, online as well as offline. And for the information, from all the continent of the world, we have treated people either in online method or offline method at our center. Is saying 1, 2, 3 or saying in new voice is the stage of treatment or end of the treatment? So I have seen many videos in social media. Sometime patient is saying for example in a high pitch voice, or once he's saying in high pitch voice 1, 2 something like that, and next 1 or 2 or he's saying in the low pitch voice. So this can be a stage of treatment. It is not a end of the treatment. End of the treatment means whatever the changes is there, that should be visible in the conversation. So you should not get impressed. जैसे कि अगर आपको जाना है दिल्ली, तो गाजियाबाद पहुंच गया तो आपको कुतुब मीनार तो नहीं दिखेगा ना, तो इसलिए यू हैव टू रीच टू द राइट डेस्टिनेशन. सो दोज आर द स्टेप्स वेयर द समबडी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस, जस्ट काइंड ऑफ or he has done something but he has not reached to that level. So you should be extra careful by seeing those kind of videos in the social media. There may be healthcare quacks also, or there may be some professional who are not confident to treat that problem but trying to attract the clients just to showing the change. हो गया एक बार पतली आवाज़ में, हो गया एक बार मोटी आवाज़ में. नहीं, चेंज है तो वो कॉन्वर्सेशन में दिखना चाहिए, ठीक है ना. तो सावधानी बरतनी चाहिए. तो नेक्स्ट इज वॉइस थेरेपी रिजल्ट इज परमानेंट. बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आते रहते थे और अभी भी आते हैं कि सर क्या चेंज जो हुआ वो स्टेबल रहेगा या जो है वो रिलैप्स हो जाएगी यहाँ से जाने के बाद. तो फिर मैंने सोचा कि इसका आंसर अगर मैं करूँगा तो देन पीपल विल बी थिंकिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट ए फॉल्स होप टू द पेशेंट. व्हाई नॉट आई शुड आस्क टू द पेशेंट टू whom I have treated 6 years back, 7 years back. So I was free, my old patients were free during the COVID pandemic time. So I did live with patients to whom we have 7 years back. So usually in YouTube channel comment box, I suggest watch this 5 minutes video most of the time if you have seen my YouTube channel comment box.
So if you go to that particular video, that 35 minutes video, in that description I have given the link of those old patients to whom we treated 6 years back, 7 years back. So just explore that, and instead of me, my patients are giving the answer how their voice is after 6 years, 7 years of treatment. तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए हमारे उस वीडियोस. इवन मैं एक बार टर्न कर देता हूँ. इवन इनफैक्ट ये वाले वीडियो हमारे इसमें अगर जाएंगे हमारे होम पेज पे, तो ये वीडियो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ. इसके अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, अगर आप देखें तो सारे मैंने लिंक्स दे के रखे हैं. आप चाहेंगे तो इसमें ये सारे लिंक्स आपको दिखेंगे जिनका बहुत पहले हमने ट्रीटमेंट किया था. इसमें कई सारे वीडियोस कंबाइन हैं, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का ये है. तो मैं चाहूँगा कि आप उसको आप लोग ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए होम पेज पे, या फिर 35 मिनट्स का वीडियो मैं कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ उसके बारे में. तो इस वॉइस थेरेपी रिजल्ट इज परमानेंट. तो ये हो गया, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. इफेक्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक ऑन वॉइस. तो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका असर पड़ता है. बहुत ठंडा या बहुत गर्म चीज़ अगर आप लेते हैं तो वोकल कॉर्ड एक मसल से, तो उस पर इम्पैक्ट आता है. तो अगर आप प्रोफेशनल वॉइस यूज़र हैं, अपनी वॉइस को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म और बहुत ही ज़्यादा ठंडा चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए. और एक और चीज़ कि खाने और सोने के बीच में डिनर टाइम, व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप एंड व्हेन यू हैव टेकन द डिनर, द गैप शुड बी एटलीस्ट 1.5 to 2 hours. So if you will not put a gap, what will happen when you go to the bed immediately after your dinner, the acid which will form for digestion of the food will accumulate at the level of the throat, and once will accumulate here, it may be damage the voice and the vocal cord. So, or even you may develop the GRD, gastroesophageal reflux disorder, even after immediately if you food you are going to sleep. So you should avoid, you should keep a gap between at least 1.5 hour to 2 hours between your dinner time and the sleeping time. Next is announcement of next batch of group therapy. So our next batch of group therapy is going to start on 14th December 2023. तो हमारा अगला जो ग्रुप थेरेपी का बैच स्टार्ट हो रहा है वो 14 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज़ हु आर द गुड कैंडिडेट फॉर वॉइस थेरेपी. तो वॉइस थेरेपी के लिए कौन से व्यक्ति हैं, कौन से लोग हैं जो हमारे सेंटर के लिए सुटेबल कैंडिडेट होते हैं. तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ. अगर आप हमारे सेंटर पर आने से पहले ये सोच रहे हैं कि टाइम और पैसा दोनों ख़राब होगा मेरा, तो आप ज़रूर सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं. और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे सेंटर पर आके आप कुछ न कुछ अचीव करेंगे, तो भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं. ठीक है. Before coming to our center, if you are thinking it is going to be a wastage of time and money, you are absolutely right. And if you are thinking you will achieve something, then also you are absolutely right. And next is all high pitch voice or female voice is puberphonia. तो सारे high pitch voice और female voice puberphonia होती हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं होती हैं जी. पतली आवाज़ एक सिम्टम है, तो उसको प्रॉपर असेसमेंट के माध्यम से, एक प्रोफेशनल के हेल्प के माध्यम से आपको समझना ज़रूरी है कि ये हाई पिच वॉइस है, पुबरफोनिया है, या फिर उसके कुछ और कारण हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने हालांकि टेक्स्ट बुक में पढ़ा है लेकिन अभी मिला नहीं है. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से भी कभी पतली आवाज़ हो सकती है. फोनेटरी गैप की वजह से भी हो सकती है. पहला जो मैंने केस बोला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वाली, मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है लेकिन अभी तक मिला नहीं है. तो फोनेटरी गैप में भी पतली आवाज़ हो सकती है, मसल टेंशन डिस्फोनिया में भी हो सकती है, सल्कस वोकलिस में भी हो सकती है. जो एक नॉर्मल पुबरफोनिया है जो प्यूबर्टी के टाइम में होता है, वोकल कॉर्ड का मास लेंथ सब कुछ ठीक है लेकिन वो नई आवाज़ पे स्विच नहीं हो पाया है, तो वो भी एक पतली आवाज़ के सिम्टम्स होती हैं. तो कारण समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेनी चाहिए. और फिर एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कि जैसे कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं अमेरिका से भी आते हैं, यूके से, लंदन से भी आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लंदन में या अमेरिका में स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं होंगे? ज़रूर होंगे. और यहाँ आने से पहले क्या वो ट्रीटमेंट ट्राई तो ज़रूर किया होगा. तो क्या मेरे पास कोई अद्भुत, कोई चमत्कारिक या दैविक शक्ति है कि यहाँ पे ठीक हो गया, अमेरिका में नहीं हुआ या फिर यूके में नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं. मैं भी उसी तरह से एक प्रोफेशनल हूँ जो बाकी दूसरे हैं, तो फिर मेरे पास अच्छे रिजल्ट क्यों आते हैं? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है ना, जो वो एक ब्रॉड साइंस है. इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच पैथोलॉजी एक
ब्रॉड फील्ड है, इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कुछ लोगों का एक्सपर्टीज हो जाती है डिलेड स्पीच लैंग्वेज में, कुछ की जैसे मेरे जैसे लोगों की वॉइस डिसऑर्डर में है, कुछ का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, कुछ की फ्लुएंसी डिसऑर्डर में, कुछ का न्यूरोजेनिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जैसे स्ट्रोक के बाद एफेजिया हो जाती है, कुछ का डिस्फेजिया में स्वेलिंग प्रॉब्लम। तो अलग अलग प्रोफेशनल का अलग अलग एरियाज में एक्सपर्टीज हो जाती है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सपर्टीज हो जाती हैं। तो अब मान लीजिए जो अमेरिका से पेशेंट आया वो वहाँ पे ट्राई किया, लेकिन जिससे उसने ट्राई किया हो सकता है वो एक्सपर्ट रहा हो डिलेड इन स्पीच एंड लैंग्वेज में, छोटे बच्चों का एक्सपर्ट रहा हो और उसके पास वो वॉइस ट्रीटमेंट के लिए गया तो फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो पैसन और हमारा जो एक्सपर्टीज है वॉइस डिसऑर्डर में, फिर यहाँ पे आया तो ट्रीटमेंट सक्सेस हो गया। तो यही एक मेन रीज़न रहा। और दूसरा रीज़न क्या है कि मैंने पढ़ाई की है एम्स दिल्ली से, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से, तो वहाँ पे केस लोड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पेशेंट भरमार होते हैं। अगर आपको किसी फील्ड में किसी डिजीज़ के बारे में, डिसऑर्डर के बारे में सीखने की इच्छा है तो पेशेंट की कोई कमी नहीं है। और फिर अच्छी लाइब्रेरी, फैकल्टी, सब कुछ वहाँ पे अच्छा था, तो सबका एक बेनिफिट मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिट पर्सनली मैं सोचता हूँ मिला वो है पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा था। अब बाकी जो दूसरी चीज़ तो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। और दूसरी बात की कि मुझे इंटरेस्ट पैदा हो गया, जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, किसी का हियरिंग टेस्टिंग, हियरिंग एवोल्यूशन, हियरिंग एड डिस्पेंसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही वॉइस में हो गया। वॉइस थेरेपी देना मेरे प्रोफेशन का हिस्सा नहीं, मेरे पैसन का हिस्सा बन गया। तो जब आप कोई प्रोफेशन चेंज हो जाता है पैसन में तो बात कुछ और हो जाती है, बस यही डिफरेंस है। और अमेरिका से इसलिए लोगों को आना पड़ता है इंडिया हमारे पास। और अगर मेरी बातों में सच्चाई है कि नहीं, इंटरनेशनल पेशेंट का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, चेक कीजिएगा कि रसिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, कौन से कंट्रीज़ आप ढूंढेंगे शायद मैक्सिमम मिल जाएगा आपको इस धरती पर के। मैक्सिमम कंट्रीज़, महादेश तो सारे हैं लेकिन कंट्रीज़ भी मैक्सिमम मिल जाएंगे। तो यही बाकी डिफरेंस है मेरे में और बाकियों में। एक रहा पैसन और दूसरा जो आदमी गया वो वॉइस का स्पेशलिस्ट ही नहीं था। अब छोटे बच्चों का एक्सपर्ट है या जो हियरिंग टेस्टिंग या हियरिंग एड डिस्पेंसिंग का एक्सपर्ट है उसके पास वॉइस थेरेपी के लिए चले गए, तो फिर तो वैसा चीज़ नहीं होगा ना। तो पैसन और प्रोफेशन पता कैसे चलेगा, तो काम तो दिखता ही, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा रिसर्च करेंगे तो पता चल ही जाएगा। और नेक्स्ट है ऑनलाइन फैसिलिटीज़ फॉर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एट आवर सेंटर्स। सो who will be the good candidate for online or who will be good for offline? So first we do the perceptual evaluation and then we comment on the issue. So if you want to know you can be a good candidate for online treatment, please call us. We'll do the perceptual evaluation and we'll be able to comment on this topic. Next is tips to keep your voice healthy. सबको इंतज़ार होगा, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है, तो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ और वो भी आपकी वॉइस और वोकल कॉर्ड को लंबे समय तक हेल्दी रखेगा। तो ध्यान से सुनिए। पहला ये है कि पानी खूब पीजिए। पानी एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है। अगर आप कंटिन्यूसली बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड ड्राई होगा, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो वॉइस और वोकल कॉर्ड डैमेज होने का खतरा रहता है। तो वाटर इज़ ए वेरी वेरी गुड लुब्रिकेंट। तो पानी खूब पीजिए। अवॉइड फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग। ऐसे बार बार करते हैं ना तो वोकल कॉर्ड में फ्रिक्शन होता है, तो यू शुड अवॉइड फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग। यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग करते हैं तो वोकल कॉर्ड पॉलिप होने का खतरा रहता है। वोकल कॉर्ड पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, उसके बाद वॉइस हॉर्स हो जाएगी, ब्रीदी हो जाएगी। और वोकल कॉर्ड पॉलिप वॉइस थेरेपी से नहीं जाता है भाई साहब, तो स्मोकिंग नहीं कीजिए। उस पहले तो सर्जरी करनी पड़ेगी अगर वोकल कॉर्ड पॉलिप हो भी गई तो, फिर उसके बाद वॉइस थेरेपी। तो अवॉइड स्मोकिंग। फिर कहेंगे कि सारे स्मोकिंग करने वाले को वोकल कॉर्ड पॉलिप हो जाएगी, तो आंसर है नहीं, लेकिन चांस तो है ना होने का, डर तो है ना। तो यू शुड अवॉइड स्मोकिंग। और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा है, इफ़ यू हैव द बैकग्राउंड नॉइज़, यू शुड अवॉइड टू स्पीक लेस, बिकॉज to increase your volume, you'll be increasing your loudness to reach to the other communication partner during the background noise. So it will create artificial stress on the vocal cord unnecessarily, and that may damage your voice and the vocal cord. Or avoid shouting. Shouting is a kind of vocal abuse. तो अगर कोई आदमी shouting करवाता है और कहता है कि वॉइस थेरेपी है, वॉइस vocal cord वॉइस थेरेपी के नाम पे, सावधान, ये vocal abuse है। Shouting is not a vocal exercise. तो अवॉइड शाउटिंग। और अगर आप टीचर हैं, सपोज सिंगर हैं, प्रोफेशनल वॉइस यूज़र हैं, कोच हैं, क्राउड अगर बहुत बड़ा है तो एम्पलीफिकेशन डिवाइस का यूज़ कीजिए। यहीं से ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर अप्लाई करेंगे तो बड़े काम की हैं। आप वॉइस और वोकल कॉर्ड को हेल्दी रख सकते हैं।
अगर आप कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो अपने फिजिशियन से मिलके उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो एसिड फॉर्म करेगा जीआरडी की वजह से अगेन वोकल कॉर्ड और यहाँ पर जब सोएंगे तो जो एसिड जमा होगा उससे आपको नुकसान होगा, वॉइस और वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनानी चाहिए। जॉगिंग, वॉकिंग, छोटे मोटे एक्सरसाइज, योगा, ये सब करेंगे तो क्या होगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी, आपकी स्टेमिना अच्छी रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट आपकी वॉइस पे भी पड़ेगा। तो अच्छी वॉइस चाहिए तो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, जिम हो, योगा हो, जो आपको पसंद है कुछ कीजिए, लेकिन ज़रूर कुछ कीजिए। तो ये रहा। और नेक्स्ट है रिप्लाइंग द क्वेश्चन फ्रॉम द लाइव चैट। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ, जो मुझे अपनी बात कहनी थी मैंने कह दिया है, अब आपकी बात सुनेंगे। आपके मन में क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं एक एक करके पढ़ते जाऊँगा। पहले के जिन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा होगा पहले उनका आंसर करूँगा, फिर मैं देखता हूँ। एक लिखते हैं, सबर लिखते हैं, आई कुड नॉट कम इन दिस बैच बट आई विल ट्राई टू कम इन द नेक्स्ट बैच। एनी बैच यू आर मोस्ट वेलकम, बट बिफोर कमिंग my suggestion is please call us. We'll do the perceptual evaluation and then we'll be able to tell you can be a candidate for the voice therapy at our center or not. Don't come directly without perceptual evaluation. मुबारक ऑफ इंडिया लिखते हैं, सर दिल्ली स्पीड थेरेपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली वर्ड यूज़ किया है तो दिल्ली मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने एम्स दिल्ली से पढ़ाई किया है, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, तो ये एक दिल्ली हो गया। और स्पीच थेरेपिक लिखे हैं, मुझे लगता है स्पीच थेरेपी लेना चाह रहे के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, वॉइस थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट जो भी कह सकते हैं मैं हूँ, और मैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आपको भी अगर कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कीजिए। परसेप्चुअल एवोल्यूशन के बाद हम गाइड करेंगे आपको कि क्या समस्या है, टाइम कितना लगेगा, ट्रीटमेंट आउटकम क्या होगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होगा, ऑनलाइन मेथड से हेल्प कर पाएंगे, ऑफलाइन से सारी जानकारी दे पाएंगे। प्लीज़ कॉल अस। हो सकता है कभी कभी टेस्ट के लिए भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोपी या स्ट्रोबोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर व्योग चैनल लिखते हैं, सर आपका ये थेरेपी ऑनलाइन होता है क्या? तो थेरेपी स्पेसिफिक होता है, अलग अलग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में अलग अलग समस्याएं होती हैं, तो उसके हिसाब से हम थेरेपी प्लान करते हैं। तो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है जिसका हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके लिए आप हमें कॉल करेंगे, परसेप्चुअल एवोल्यूशन करेंगे, फिर हम फीडबैक दे पाएंगे। नेक्स्ट है दीपक सोनी लिखते हैं, सर मुझे आपसे बात करनी है, ज़्यादा गर्लिश नहीं है, थोड़ा बना के बोलता हूँ। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी वॉइस गर्लिश है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा ख़राब है, तो एक बार कॉल कीजिए, हम सुनेंगे आपकी आवाज़ को, फिर गाइड कर पाएंगे। पहले हमारी टीम आपकी आवाज़ सुनेगी, अगर उसको नहीं समझ में आएगा और आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेंगे, तो मैं आपकी इससे बात कर लूँगा। और नेक्स्ट कृष्णा सिंह कुछ लिखते हैं, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग अस। और तुषार लिखते हैं, नेक्स्ट बैच क्या है सर? नेक्स्ट बैच 14 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो रहा है। तो तुषार जी, अगला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 14 दिसंबर 2023 को। और आने से पहले अवश्य हमें कॉल कीजिए, हम आपकी वॉइस का परसेप्चुअल एवोल्यूशन करेंगे, तभी हम कमेंट कर पाएंगे कि आपको हमारे यहाँ आना चाहिए अपनी समस्या को लेके या नहीं आना चाहिए। और अजय जोशी लिखते हैं, सर नेक्स्ट बैच के लिए नेम कब तक देना होता है? तो हमारी टीम को कॉल कीजिए, और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, या हमें मेल कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगी। और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप जो लाइव चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, एंड आई विल बी शोइंग वंस दोज पेशेंट हु हैज़ कम फॉर वॉइस थेरेपी, and we'll be stopping this live, and in the future you are going to watch the post treatment. So I'll be turning this camera towards those patient who has come. तो इन लोगों का हम पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव करेंगे, जिनको आपने अभी देखा, और इनफैक्ट जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट इससे काफ़ी ज़्यादा है जो आप लाइव में देख पा रहे हैं, लेकिन वो लोग वीडियो के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, मैं इनको नहीं दिखा पाया। तो जिनके भी क्वेश्चन का आंसर मैं लाइव में नहीं दे पाया, वो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगले लाइव में, या फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर हम किसी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू ऑल। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच।
And after 8 days, we'll be doing post-treatment live. So don't forget to watch the post-treatment live. For that, you can subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Thank you all. Love you all.